Welcome to my YouTube channel Legalophobia. Today we are going to study the definition of fact. Let's start. Fact means and includes. Here the word means and includes both are used. See, always the word means is used if the definition is exhaustive, and includes word is always used when the definition is non-exhaustive. It is the rule of interpretation. Okay, so there seems to be a conflict between the two, whether the definition of fact is exhaustive or not non-exhaustive. So there has to be a harmonious construction between means and includes. Okay, so fact means and includes. Subsection 1 talk about physical fact. Section 2 talks about mental fact. So this classification is given by Bentham that fact are of two types, that is physical fact and psychological fact. For this particular thing, for this classification, the definition is exhaustive, that fact will always be a physical fact and it will be a psychological fact. But subsection 1 and subsection 2 give some examples of physical fact and mental fact. So anything, for example, these are anything, state of thing, relation of thing, these are the example of physical facts. Anything, state of thing, relation of things, these are the examples of physical fact. For this examples, the definition is non-exhaustive, because in the word anything, all the thing can be added, like what we can see, what we can hear, what we can smell. These all fact will fall under the word anything. So for examples, the definition is non-exhaustive, and for the definition that facts are of two types, physical fact and psychological fact, the definition is exhaustive. Right, now we will understand that what what is the meaning of anything. So as I said that the word anything includes what we can see, what we can hear, what we can smell. See, I can see something, particular thing. I can see on road cars are moving. Then it is a physical fact. Why it is a physical fact? It is a physical fact because I am able to perceive it by the senses. I can see with my eyes that something is moving on the road. Okay, that's why it is a physical fact. I can smell that in my house chole chawal is cooked. So that thing I can smell. So that will be anything which we can hear, see, or taste. That is a physical fact. Now state, what is state of thing? State of thing is some circumstances which continues to exist or repeat itself. Means sun rises from the east, so sun rises every day from the east, right? These days COVID cases are increasing. It is a state of thing. This situation exists from last March. See, it is repeating. The thing which repeat in itself is a state of thing. That certain there is a certain road on which everyday accident take place. So this is a state of thing, that this is a road where always accident to take place. Relation of things, for example, now we are talking about relation of thing. A declares that B is my wife. Then it is a fact which a person can hear, that the person is declaring that B is my wife. So this is a relation of thing, capable of being perceived by the senses.
मतलब जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, ये हम कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस ही तो कर रहे हैं, हम इसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फिजिकल फैक्ट हो गया, हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस का मतलब यही होता है। See, subsection 2 is any mental condition of which any person is conscious. See, there are two types of mental conditions. One is a conscious mind, another is a subconscious mind. See, when we are sleeping and seeing something in our dream, then it is our subconscious mind. It cannot be a fact. It cannot be a fact. I am conscious that if I will teach you, then my students will understand. If I will teach properly, then only my students will able to catch the things. So what is it? It is a conscious. I am conscious that if I will teach good, only my students will able to understand anything. So now read the illustration, that there are certain objects arranged in a certain order in a certain place is a fact. See, now I will use some Hindi so that you can understand the example. अब यहाँ लिखा है that there are certain objects arranged in a certain order in a certain place. जैसे कोई X place है, वहाँ पे कुछ सामान बिखरा हुआ है, तो वो सामान बिखरा हुआ है, हम वो देख सकते हैं। वो सामान बिखरा हुआ है, हम वो देख सकते हैं। तो ये किस में फॉल करेगा? ये एनीथिंग में फॉल करेगा। मैंने आपको बताया एनीथिंग इंक्लूड्स इसमें व्हाट यू कैन सी, व्हाट यू कैन हियर, देन इट विल फॉल अंडर फिजिकल फैक्ट. इट इज अ फिजिकल फैक्ट. ए इज अ फिजिकल फैक्ट क्योंकि वो हम देख सकते हैं. दैट अ मैन हर्ड और सॉ समथिंग. ठीक, दैट अ मैन हर्ड और सॉ समथिंग इज अ फैक्ट. किसी ए ने कुछ सुना कि बी कह रहा है कि सी कोई बंदा है जिसने डी का मर्डर कर रखा है. तो ये क्या है? ये हर्ड, वो सुन रहा है और वो देख रहा है कि कौन बंदा वो बात बोल रहा है. तो इट इज ऑल्सो फिजिकल फैक्ट क्योंकि आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो. तो ये भी एनीथिंग के डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा. दैट अ मैन सेड सर्टेन वर्ड इज अ फैक्ट. किसी ने कुछ बोला, ठीक है. अब वो क्या बोल रहा है? वो अपने मुंह से बोल रहा है. ठीक है, तो मैं देख सकता हूं कि वो ये बात बोल रहा है और मैं सुन भी सकता हूं कि वो ये बात बोल रहा है. तो ये भी आपका एनीथिंग में ही फॉल कर जाएगा और ये भी सी भी आपका फिजिकल फैक्ट है. दैट अ मैन होल्ड अ सर्टेन ओपिनियन हैज अ सर्टेन इंटेंशन एक्टेड इन गुड फेथ और फ्रॉडलेंटली और यूजेस पर्टिकुलर वर्ड इन पर्टिकुलर सेंस और इज और वॉज एट स्पेसिफाइड कॉन्शियस ऑफ अ पर्टिकुलर सेंसेशन. दैट मेरी इंटेंशन है कि मैं घर खरीदूं. मेरी ओपिनियन ये है कि नरेंद्र मोदी एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं. तो ये क्या है? ये मेरी अपनी एक ओपिनियन है जो मेरे दिमाग के अंदर है. मैं कॉन्शियस हूं कि अगर नरेंद्र मोदी रहे तो भारत अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा. तो ये क्या है? ये ओपिनियन मैंने होल्ड कर रखी है, तो ये मेरे दिमाग में है. तो इट इज़ अ मेंटल फैक्ट. आई एम कॉन्शियस अबाउट इफ नरेंद्र मोदी विल बी अ प्राइम मिनिस्टर फॉर सम मोर ईयर्स, देन ही विल हेल्प इन द बेटर ग्रोथ ऑफ द कंट्री. ठीक है. दैट अ मैन हैज़ अ सर्टेन रेपुटेशन इज अ फैक्ट. कोई एक एक्स बंदा है, किसी के दिमाग में है कि वो यार अच्छा बंदा है, वो सबकी हेल्प करता है. मैं ये अंदर अपने मैंने एक अपने दिमाग में धारणा बना रखी है कि वो एक्स एक अच्छा बंदा है, उसकी अच्छी रेपुटेशन है मेरे दिमाग में. तो इट इज़ ऑल्सो अ मेंटल फैक्ट. सी एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग, ये फिजिकल फैक्ट हो गया. सबसेक्शन 2 आपका मेंटल फैक्ट की बात करता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब.